Okay, so the next is water for everyone. Water is basic necessity for everyone. In some places, discrimination is done. People belonging to poor families are not allowed to take water from water sources. Okay, so first of all, I want to tell you that is water is for everyone. There is no discrimination when it comes to water. वॉट इज़ फॉर एवरी वन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. जितना पानी में पे मेरा हक है बिकॉज उतना ही पानी पे आपका भी हक है, बिकॉज इट हैज़ लाइक इट इज़ गिवन बाय नेचर. ओके, बट what happened in villages in like if there are small villages there people live जो लोग बहुत पुअर होते हैं, they don't like there is some caste system happen जो लोअर कास्ट और इन सब में बिलीव करते हैं. तो व्हाट हैपन कि जो पुअर लोग हैं दे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, दैट दे कैन नॉट यूज सोर्सेस ऑफ वाटर. ओके, सोर्सेस ऑफ वाटर एज इन की रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ये सब वो यूज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दे आर पुअर. ओके, सो इफ इन आवर क्लास इफ आई से आई एम पुअर, तो will school people will not allow me to have water from the tap? ऐसा होगा? नो, बिकॉज वी लिव इन सिटी. बट इन विलेजेस समटाइम्स इट हैपन कि दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल पुअर एंड रिच. ओके, सो द पुअर पीपल आर नॉट अलाउड टू use the sources of water which rich people use. So this discrimination should not happen. So what is the meaning of discrimination? Discrimination, unfair treatment of different categories of people because of their skin color and race. So discrimination क्या होता है कि किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करना, अनफेयर ट्रीट करना. ओके, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही अनफेयर होता है, दैट यू आर ट्रीटिंग समवन रॉन्ग ना, अनफेयर ट्रीट कर रहे हो या फिर you are not treating them right because of some reason like they are not rich, they are dark, they are not fair, or anything, caste, religion. So these are the few things because of discrimination happened. Okay, come to the page number 30, and there is the 3 pictures. Okay, time to answer. So look at the pictures and identify the source of water. So first source, second source and third source. ठीक है, so there are 3 sources जो आपको बताने हैं कि वो क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट सोर्सेस आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई एक नेचर का दिया हुआ है. तो दिस इज ओशन. फर्स्ट इज ओशन, सेकेंड इज वेल, दैट इज दिस इज मैन मेड, दिस इज वेल, एंड द थर्ड इज रिवर. ओके, सो ओशन, वेल एंड रिवर. आपको यहाँ पे ये जो आपको 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे ओशन आएगा, यहाँ पे वेल आएगा और यहाँ पे रिवर आएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट नेक्स्ट. कम टू द ओके, सो देयर आर 3 forms of water. First is liquid, second is gas and the third is solid. ओके, तो मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दे सकती हूँ. ओके, so when you drink a water, है ना, when you drink water तो वो liquid form में है. okay, that is liquid ही. okay, but when you freeze in the freezer, okay, when you freeze in the freezer that liquid water, when you take the liquid water and freeze in the freezer, it becomes ice. So that is a solid form. Okay, so when you drink a water, it is in the liquid form. When you store and freeze in the freezer, that is a solid form of water. Okay, and when the food cooks, है ना, when you boil a water, है ना, so when you boil a water, then when the evaporation comes, है ना, so उसको that is called gas. Okay, so there are 3 forms of water. First is liquid water, when you drink water, when you wash clothes, when you bath, these are the liquid form of water. Then second is when you freeze and store liquid in the freezer, then it becomes in a solid form, and when you boil the water, that it becomes in a evaporation form. Yeah, so there are 3 forms of water: liquid, gas and solid. So all these forms are interchangeable. For example, in summers we put water in the ice tray and keep it in the freezer, and it freezes it to form ice.
is a ice is hard and solid form of water. The water we drink is liquid. When the water is boiled, it changes into steam. Okay, or water vapor, which is the gaseous form of the water. So similarly, what I have said, that when you drink water, so it is in the liquidy form. When you keep it in the freezer, it becomes in solid form, and when you boil the water, okay, so it becomes steam, and the form it gets its gas. Okay, time to answer. To there are three pictures. Okay, so time to answer my question is that pictures given below show water in all its three forms. Right under with each picture the state of water. So the first picture is of ice, so that उसके नीचे आप लिखोगे solid. Okay, so it is in the solid form. Then in second picture you can see the river. In second picture you will write liquid form, and in the third picture there is a pan. Okay, so usme you can see the gas is coming from the pan, so that is gas form. Okay, so it's solid, liquid and gas. So there are three forms: solid, liquid and gas. Again I am telling you, when you जब आप नहाते हैं, खाना नहाते हैं और पानी पीते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, तो वी यूज़ लिक्विड फॉर्म. कभी देखा है आइस से बर्तन धोते हुए, बर्फ़ लेके हम बर्तन धो रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता. कभी बर्फ़ को पानी पीते हुए देखा है? नहीं. मतलब बर्फ़ लेके आपने ऐसे पानी की प्यास बुझाते अपने आप को किया है ऐसे? नहीं. So when you drink water, when you clean, when you cook, when you wash clothes, so this is the liquidy form of water. Then second, when you freeze, जब आप उस पानी को फ्रीज़र में रख देंगे तो it will become solid form. And then अगर उस पानी को अगर आप बॉईल करते हैं तो ऊपर जो स्टीम आएगा तो वो और फिर आप सिर्फ उस पानी को वैसे ही रहने देंगे ना, तो सारा पानी गायब हो जाएगा और सारा स्टीम बन के निकल जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा. तो दैट इज़ अ गैस फॉर्म. सो देयर आर थ्री फॉर्म्स: लिक्विड, दैट इज़ वाटर; सॉलिड, दैट इज़ आइस; एंड थर्ड इज़ गैस, दैट इज़ वाटर वेपर. वाटर वेपर भी होता है, स्टीम के फॉर्म में निकल जाता है. Okay, so page number 31 पे there are three pictures. The pictures given below show the water in all the three forms. Right under each picture in the state of water. First is ice, so you will write solid. Second is river, so you will write liquid. Third is the pan, and from pan steam coming out, vapor coming out, so that is gas form. So in the next video we will understand and learn the water cycle. Water cycle is divided in 4 steps: rain, evaporation, condensation, precipitation, and the water cycle. So this will we will understand in the next video. Tomorrow is holiday, so enjoy your day and have a nice day.